Good morning, students. Good morning, students. Dr. Rakhi Goyal, PGT Chemistry, Kendriya Vidyalay, AFS Ojhar. So today we are going to discuss the very important chapter in chemistry, that is chemical kinetics. We can say it is the sister concern of thermodynamics, which we have studied earlier in class 11th. So how it is related to thermodynamics? Children, for any chemical reaction, chemist and scientist, they are trying to find out what? Two things. Number one, the feasibility of a chemical reaction, which can be predicted by thermodynamics. That means by thermodynamics, we can predict the reaction is feasible or not. Just remind, we have learned about Gibbs free energy and its sign, that is delta G. If delta G is lesser than 0, that means it may be negative also. If it is negative, then reaction will be spontaneous, and if it is positive, then reaction will be non-spontaneous. Okay, next. If delta G is less than 0, that means at constant temperature and pressure, reaction is feasible. Now, next point. Extent to which a reaction will proceed can be determined from chemical equilibrium. That means magnitude of reaction. We can calculate magnitude of reaction. We can calculate by chemical equilibrium. That means reaction quotient, etc. we have earlier studied. Now, the third important consideration, that is speed of a reaction. In this chapter, we are taking this more important topic, speed of a reaction. That means time taken by a reaction to reach equilibrium, यानी equilibrium तक जाने तक उस reaction ने कितना time लिया, इसे ही हम we can calculate it by chemical kinetics. So what is the chemical kinetics? It is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction. Just imagine, students, if an aeroplane is flying, okay, so in what time it is covering what distance? When we calculate this, that is the speed of the aeroplane. And in case of chemical reaction, we consider the rate of reaction in terms of concentration of reactant as well as product. So the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates, factors affecting reaction rate, and also we can explain mechanism of a reaction called chemical kinetics. That means thermodynamics कभी भी किसी reaction का mechanism explain नहीं कर सकती है. Chemical kinetics बता सकती है कि कौन सा reaction किस mechanism से होगा. Now, based on reaction rate, chemical reactions can be classified in 3 categories. That means kinetics में हम rate of reaction के base पर reactions को 3 part में categorize कर सकते हैं. Number 1, reactions which occur instantaneously. That means वो इतनी fast हो रही हैं कि हम उनकी study नहीं कर सकते. That means, take an example, precipitation of silver chloride occurs instantaneously by mixing of aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride. That means if we are mixing silver nitrate and sodium chloride, the product will be silver chloride. But ये reaction इतना fast होगा दोनों का mixing कि हम देख ही नहीं पाएंगे, हम इसकी rate को study नहीं कर पाएंगे. Now, second is very slow reaction. That is rusting of iron in the presence of air and moisture. एक iron का bench है, उसे आपने अभी बाहर बारिश में पार्क में रख दिया है. So what will happen? Gradually it will get rusting. ये rusting होती जाएगी, लेकिन ये इतना slow process है कि we cannot study the rate of reaction. Now come to the third one, that is reaction which occur with moderate rates. इन्हीं को हम study कर सकते हैं, इन्हीं की हम kinetics पढ़ेंगे. That like example is inversion of cane sugar and hydrolysis of starch. Inversion of cane sugar is most important. Okay, next. Students, just enjoy this picture. So you will learn very easily. When silver nitrate solution reacts with sodium chloride.
silver nitrate always kept in brown bottle, and here in the test tube sodium chloride solution. So the reaction will be very fast and you will get white PPT of silver chloride. Now consider the rate in terms of reactant and as well as product. So if we consider the concentration of reactant and rate of the reaction. So with reference to reactant, what will happen? The concentration of reactant gradually decreases with time, and at the same time the concentration of product will increase at the same time. Students, we are taking 1 mole of reactant A, and if we are getting 1 mole of product B, that means we are doing this reaction when volume remains constant. Let me consider the volume remains constant. So in this picture you can see concentration of reactant A is very high, that is in maximum state. Now you can see in this picture the concentration of product B, right now it is 0, and after some time what will we see? We see the concentration of reactant A gradually reaching to 0. That means it is getting minimized, and concentration of product is continuously increasing. My dear students, now we are in the position to calculate rate of a chemical reaction. So let me consider a hypothetical reaction in which I am taking reactant R and I am getting the product P. Okay, so defined as the change in concentration of a reactant or product in unit time. Okay, now at time T1, what is the concentration of reactant? That is R1. If we are using square bracket here, concentration. Okay, so if R is present in square bracket, that means it is considered as concentration of R at time T1. So it will be called R1, and the concentration of product at that time means at that time T1 it is P1. So at time T2, that means after some time, R will be R2, that means final concentration of reactant, and P2 final concentration of product. If we take interval of time, difference in time, that is del T, so it will be T2 minus T1, final time minus initial time. So change in reactant concentration is, so it can be calculated as del, that means difference in concentration square bracket, and R, that means of reactant. Okay, now I am repeating this term. Del signifies the change, square bracket signifies concentration किसकी? Of R, reactant की, is equal to final concentration minus initial concentration, that means R2 minus R1. And similarly for the product is del P is equal to P, concentration of product at final stage, minus concentration of product at initial stage. Now rate of reaction in terms of reactant, change in concentration of reactant by or we can say divided by time taken for change. So that is del R upon del T. Why we are using here a negative sign? Why we are putting this negative sign? As the final concentration R2 is lesser than initial concentration R1. So when you will subtract R2 minus R1, it will be always a negative value. Okay, so this is average rate. Now since del R is a negative quantity, as concentration of reactant is decreasing with time, so it will be multiplied with -1 to make it the reaction rate positive. Okay, now rate of reaction, actually न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए. Now come to the rate of reaction in terms of product.
So change in concentration of product upon time taken for this change, that is del P by del T. This average rate according to product. Average rate depends upon the change in concentration of reactant or products and the time taken for that change to occur. So what is the average rate? That is depends upon the change in concentration. किसका? चाहे reactant का, चाहे product का. वो हमने लिया है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम टेकन के. ओके, सो इट इज एवरेज रेट. स्टूडेंट्स, if we plot a graph between concentration and time, so we will get this type of graph. In this, green line is showing for change in concentration of reactant and purple line is showing change in concentration of product. So you can see very easily, as the time spent, then with time change in concentration of reactant, what is happening? It is decreasing, and the change in concentration of product, that is increasing. Students, now come to the instantaneous rate, the rate at a moment of time. Just imagine you are riding on a bike. Okay, so you can see your speed by the speedometer. Okay, आपने 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की, यानी आपका क्या स्पीड रहा? So you will what you will do? 150 kilometers divided by 5 hours. That means your speed is what? 30 kilometer per hour. So this is your average rate. Okay. लेकिन आपकी बाइक हमेशा क्या एक स्टेडी रेट से चली होगी, एक स्टेडी स्पीड से चली होगी? नो, ये इसमें कई अप डाउन आए होंगे. So we can calculate instantaneous rate. That means the rate at a moment of time, or it is the average rate but at the smallest time interval. So we can say when delta T approaches to 0. Like मैंने उत्कर्ष को कहा कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैं 10 मिनट बाद आकर इसको देखूंगी. अब उत्कर्ष के लिए टाइम कैसा चल रहा है? उत्कर्ष ये कहेगा मैम अब आने वाली है, 9 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए. Now the time is remaining 7 minutes, 6 minutes left. Now 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That means what is happening? For Utkarsh, time approaches 0. Okay, so mathematically what we can write are instantaneously. That means change in concentration of reactant by delta T. Student, you can see we are here putting negative sign as it is, and for product del P by del T. So when time approaches to 0, then R instantaneously will be equal to, in case of reactant it will be minus dr by dt, and in case of product it will be positive dp by dt. So it can be determined graphically. ग्राफ से हम इसे निकाल सकते हैं बाय कैसे? एक टेंजेंट डालकर, यानी हम इसे tan थीटा की फॉर्म में निकालेंगे. साइन कैसे निकालेंगे? y बाय x. एक टेंजेंट डालेंगे और इसे y बाय x की फॉर्म में निकालेंगे. स्टूडेंट्स, so you can see two graphs here. First is for reactant and second is for प्रोडक्ट. इन दोनों ग्राफ में हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों को समझाया है. फर्स्ट ग्राफ में हमने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बताई है, एंड इन द सेकंड ग्राफ वी आर एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. बोथ द रेट ऑफ रिएक्शंस वी आर एक्सप्लेनिंग इन द सिंगल ग्राफ, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज rate of reaction. So consider the first one, that is for reactant. Okay, when we are calculating the average rate for our reactant, so हम क्या करेंगे कि कोई भी दो टाइम लेंगे. Okay, you can see हमने इधर ये दो टाइम लिए हैं T1 and T2. You can see at the time scale, you can see T1 and T2, and concentration में हमने लिया है R1 and R2. R1 ऊपर है क्योंकि विद टाइम
concentration of reactant will decrease. तो R2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ आएगी? नीचे, और R1 कहाँ आएगा? ऊपर, राइट? और अगर आप इसी को प्रोडक्ट के केस में देखोगे सामने वाले ग्राफ में, तो आप क्या देखोगे? T1 और T2 तो अपनी जगह पर है, लेकिन P1 कहाँ है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नीचे, और अब ये समय के साथ क्या हुआ इसकी? विद द टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तो P2 कहाँ चला गया है? ऊपर। क्या आपको दोनों ग्राफ में समझ में आया होगा? ओके, आई थिंक आपको अच्छे से आया होगा। ओके, सो नाउ अगर आप R1 के सामने उस ग्राफ पर एक पॉइंट ले जाके डाल देंगे और वहां उसको आप डॉट से मैच करेंगे और R2 से ले जाके मैच करेंगे, राइट? सो यू विल गेट द डिफरेंस, दैट इज डेल्टा R, and the difference between T will be delta T. Okay, so now if you are calculating R average for the reactant, so you will get minus, that means change in concentration of reactant is negative del R by del T. But in case of average rate of product, what will happen? You will get positive del P by del T. यानी आपको हमेशा एवरेज रेट के लिए क्या करना है? आपको हमेशा दो टाइम लेने हैं और दो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, दोनों को ग्राफ पर मैच करना है, उसका डिफरेंस निकालना है। देन इन दैट केस यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट क्या करेंगे आप? उसके लिए आप क्या करेंगे? टाइम कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ पर एक डॉट लगाएंगे, एक पॉइंट लेंगे। इसमें इस एरो से दिखा रखा है, देखिए सेकंड वाले ग्राफ में उसने एक पॉइंट से दिखा रखा है प्रोडक्ट वाले ग्राफ में, और वहां से उसने टेंजेंट डाला है। और अगर इसको आप पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, देन आप देखेंगे tan थीटा, दैट इज y बाय एक्स। y बाय एक्स के लिए उसने क्या लिखा है वहां? dp बाय dt, एक ट्राइंगल सा बना के dp बाय dt। ओके, सो दिस विल बी आर इंस्टेंटेनियस। ओके, एंड जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप क्या होगा? dp बाय dt, और वही इसका क्या होगा? r इंस्टेंटेनियस। यानी कि स्लोप जो है वो शो करेगा किसको? वो शो करेगा इंस्टेंटेनियस रेट को। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, एंड इट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। Units of rate of reaction we can calculate automatically if it is change in concentration per unit time, that means concentration time inverse. Okay, so for example, if concentration is mole per liter, actually we always take concentration in mole per liter, and time is in second, so unit will be mole per liter per second, or we can say mole liter inverse second inverse. But in gaseous reaction, actually ये CBSE का favorite है, in gaseous reactions when the concentration of gases is expressed in terms of their partial pressure, then the units of the rate of reaction will be atmosphere second inverse or bar second inverse. Actually time को तो हमने second inverse में रखा है, और ऊपर concentration के place पर हमने रख दिया है किसके लिए? concentration of gas के लिए हमने use किया है atmosphere, और we can use bar. Now consider the reaction. In this reaction you can say Hg mercury when reacts with Cl2 chlorine gaseous state, it will give HgCl2. Okay, when stoichiometric coefficients of the reactants and products are same, that means stoichiometric coefficient of Hg is 1, that means number of molecules. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको याद होगा, हमने 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। Hg का कितना मोल लिया है हमने? 1, दैट मींस इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। Cl2 का कितना हुआ? 1, और HgCl2 भी कितना मिला है हमें? 1 मोल। तो इनका सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। देन रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी गिवन एज, कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को? ऐसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस delta of concentration, change in concentration of Hg upon time equal to minus, that means same, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है तो इन दोनों में क्या लगा है? माइनस, और HgCl2 क्या क्या लगेगा? प्रोडक्ट। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप सुनिए। Hg और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? HgCl2।
ओके यानी जिस समय में Hg मर्क्यूरी जितना कम रिएक्ट होके Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा उतना ही क्या बनाएगा HgCl2। तो रिएक्टेंट की टर्म में और उसमें भी स्पेशली मर्करी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, दैट इज माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T। माइनस क्यों आया, क्योंकि विद द टाइम concentration is decreasing. Now come to the next, Cl2, it is also a reactant, so concentration of Cl2 will also decrease and in respect to HgCl2 it will increase. So rate of disappearance of any of the reactant is same as the rate of appearance of the product. Now let's take another example. In the following reaction, the stoichiometric coefficient of Hi is 2. Okay, and 2 moles of Hi decomposes to, in this, 1 mole of H2 and 1 mole of I2. So when the rate of consumption of Hi is twice, we can say, okay, so the rate of formation of H2 or I2, so to make them equal, the term delta Hi, that means change in concentration of Hi, is divided by 2. इसकी छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है ये कि आपको रिएक्शन में ये देखना है कि जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको कहाँ लगा देना है, उन्हें डिनोमिनेटर में लगा देना है। और अगर ये ऊपर ऐसे आता लाइक अभी इसको देखिए पहले, लाइक ये आ रहा है 2 मोल ऑफ Hi, तो हमने क्या किया, इस 2 को उठा के Hi, पहले हमने इसकी इक्वेशन लिखी डेल Hi बाय डेल T और इसको उठा के कहाँ रख दिया, इसके डिनोमिनेटर में। मैं आपको इसका एक और एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी देती हूँ, बट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस। So for 2 moles of Hi when decomposes to 1 mole of H2 and 1 mole of I2, then rate expression will be minus half of del Hi by del T is equal to del H2 by del T is equal to del I2 by del T. So rate of such a reaction where stoichiometric coefficients of reactant or product are not equal to 1, rate of disappearance of any of the reactant or the rate of appearance of product is divided by their respective stoichiometric coefficient. Students, similarly, if we are taking an example of this, when 5Br minus reacts with bromate BrO3 minus in aqueous medium or acidic medium, that is 6H plus, it will give 3Br2 plus 3H2O. Br माइनस का क्या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5, उसे उसके डिनोमिनेटर में रख दिया है। Br03 का कितना है 1, उसके नीचे यानी अपने आप से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वहां 1 है और वो डिसअपीयर है। H प्लस का कितना है 6, उसको डिनोमिनेटर में रख दिया। Br2 का कितना है 3, डिनोमिनेटर में रख दिया। H2 का कितना है 3, डिनोमिनेटर में रख दिया। Got it? If you have any query up to this slide, you can ask me on my personal number right now. Okay, for a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to the partial pressure of species. Later we will explain it. So rate can also be expressed as rate of change in partial pressure of the reactant or the product.